नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी का 15वां पाठ करेंगे। पाठ का नाम है दाज्यू। लेखक का नाम है शेखर जोशी। पहले हम लेखक परिचय सुनेंगे। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्य रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखक कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोशिका गटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा तथा एवं नौरंगी बीमार है। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान सम्मानित। दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण। दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। दाज्यू का अर्थ है बड़ा भाई, गुजराती में कहवाय मोटा भाई। अब हम पाठ सीखेंगे। चौक से निकलकर बाईं और जो बड़े साइनबोर्ड वाला छोटा कैफ़े है, वही जगदीश बाबू ने अपनी पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली शफाफ आंखें, सुंदर सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती, आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता है और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। लेखक કહે છે કે જ્યારે એ ત્યાંથી પસાર થાય છે તો એક ચોક બાજુથી નીકળે છે તો ત્યાં એક નાની એવી હોટલ હોય છે, તો એની અંદર એ જગદીશ બાબુ એને પહેલી વાર જુએ છે તો એનો રંગ કેવો છે, ઘોડા રૂપાળો રૂપાળો છોકરો હોય છે, લગભગ 9-10 વર્ષની આજુબાજુ, અને તે પહાડીનો છોકરો હોય એવું લાગે છે એને જોઈને। અને ગોરો ગોરો સરસ મજાની નીલી આંખ, સરસ મજાના સોનેરી વાળ એ જોઈ અને લેખકને એમ લાગે છે કે આ કદાચ 9-10 વર્ષની આજુબાજુનો છે। अध जली सिगारेट का एक लंबा कस खींचते हुए जगदीश बापू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था और जब वे पास ही कोने में की टेबल पर बैठा तो वह सामने था। कहते जगदीश बाबूए अर्धी सिगारेट पी અને એ સિગારેટની પ્લેટમાં નાખતા હશે તો કહે છે જોયું તો આ તો કોઈ આ છોકરો હતો એ બીજે કંઈક ટેબલ ઉપર પડેલી પ્લેટ ઉપાડતો હતો અને એની બાજુ ખૂણામાં રાખતો હતો, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाली व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही हो। वह कुछ बोला नहीं, हाँ नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। કહે છે કે છોકરો કાંઈ બોલ્યો નહીં, પણ જાણે એવું લાગતું હતું કે કોઈકની રાહ જોતો હોય એવું લાગતું હતું। એ બોલ્યો કાંઈ નહીં, પણ એણે ખાલી વિવેક વિનયથી નમ્યો અને થોડુંક હાસ્ય કર્યો, સ્મિત આપ્યું અને એ એમને મૌન રહ્યો, જાણે કે એ मौनी हो। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुरा कर चल दिया और पलक जपते ही चाय हाजिर हो गई कि भाई एक कप चा ले आओ। एनो ऑर्डर मळ्यो ते हसी અને પાછો ગયો અને તરત જ ચા લઈને હાજર થયો। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। लगता है
इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है, परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जानवरमय वातावरण में रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन, पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती हैं बिछोह या विरक्ति की कथा, किसी कथा के मूल में। કહે છે કે મનુષ્યની ભાવના પણ કેવી વિચિત્ર પ્રકારની હોય છે કે ક્યારેક ક્યારેક એકાંત સ્થાનમાં હોય અને કોઈ સાથે ન હોય તો એકલાનો અનુભવ પણ કરતો હોતો નથી, પણ જ્યારે એ કોઈકની નિકટ હોય, પોતાનું હોય, તો પણ એને ક્યારેક એકલા જેવું લાગતું હોય છે। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। जगदीश बाबू હોય છે એ દૂરથી આવેલા છે અને એકલા છે, અને ચોકની અંદર ચારે બાજુ હાલચાલ ચાલુ છે, અને આ જે નાની હોટલ છે એમાં પણ અવાજ થતો હોય છે, છતાંય પણ એમ લાગે છે કે હું પોતે, મારું અહીં કોઈ છે નહીં, પોતાનું કોઈ લાગતું નથી। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे, पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज छोड़कर अपने निकट शहर के कैफे होटल। કહે છે કે એને એમ લાગે છે કદાચ થોડાક દિવસો અહીં રહીશ અને જાણીતો થાઈશ અજાણ્યામાં, તો મને એવું લાગશે કે અહીં કોઈક મારું પોતાનું છે, પણ કેટલે સુધી, કેટલું દૂર, અનાયાસ ઓચિંતાને એને કોની યાદ આવે છે, અને એ પોતાનું સ્કૂલ કોલેજના દિવસો યાદ કરે છે। ત્યાં તો થોડીક વારમાં જ ચાય સાબ, ઓલો છોકરો કહે છે, સાહેબ હું તમારા માટે ચા લઈને આવ્યો છું। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया कि जगदीश बाबूए जे सिगरेट पीता था एणे ए सिगरेटनी राख छे ए राखदानीमां नाखी, અને એને એમ લાગે છે કંઈક અવાજ સાંભળે એટલે કે ભાઈ કોઈક મારું પોતાનું આવ્યું છે। રિક્તતા એટલે ખાલી જગ્યા, ખાલી જે સ્થાન હોય એ ખાલી ખાલીનો અનુભવ કરતા હતા, તો એને થયું કે કાંઈ કોઈ આવ્યો। क्या नाम है तुम्हारा? पूछे जे कि शू नाम तारू छे? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? वाह सारू मदन, तो क्यांनो रहवा वाळो छो? पहाड़ का हूँ बाबूजी, के पहाड़नो हूँ रहवा वाळो छूं, पहाड़ी प्रदेश नो रहवा वाळो छूं। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? के पहाड़ तो घणा बधा छे, पर तू कया पहाड़नो रहवा वाळो छो? आबूनो छो, दार्जिलिंगनो छो, मसूरीनो छो, शिमलानो छो के अल्मोड़ानो छो? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। आ वखते कदाच एवुं लागे छे के एने पहाड़ अने जिल्लामां अलगता शुं छे ए भेद एने खबर पड़ी गई, एटले हसीने बोल्यो कि साहेब अल्मोड़ानो छुं, अल्मोड़ानो। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? पूछे छे कि अल्मोड़ा में कયું ગામ છે? विशेष जानकारी की गरज से शरद बाबू ने पूछा। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा के 15-20 मील। હવે આ પ્રશ્ન જ્યારે પૂછો ને કે ભાઈ એમાં કયું ગામ છે, તો એને તો સંકોચ થઈ ગયો, ભાઈ આ કયા મારા ગામનું નામ બોલે, મને કાંઈ ખબર પડતી નથી, અને ખબર પણ ન હતી, એટલે કહે છે કે સાહેબ અલ્મોડાથી થોડુંક 15-20 મીલ दूर છે। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। तोय पण એ ગામનું કંઈક નામ તો હશે ને? ड्योढ़ा लगो, यह सकुचता हुआ सा बोला। હવે ગામનું નામ એવું હતું ને એ શરમાતો હતો, એટલે કે ड्योढ़ा लगो એ ગામનું નામ બોલતા બોલતા એ संकोचाओ એટલે लज्जा अनुभवे છે। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई।
जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। पर जगदीश बाबूના ચહેરા ઉપર જે એકાકીપણ હતું એ દૂર થઈ ને એવું લાગે છે, હસે છે અને કહે છે કે વાહ, હું પણ એની નજીક જે ગામ છે ને ત્યાંનો રહેવાવાળો છું। તો એની આ વાત સાંભળી અને મદન પણ રાજી થઈ ગયો। એને એમ થાય કે હમણાં જાણે કે મારા હાથમાંથી આ ટ્રે છે એ પડી જશે। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सब अपने अतीतों को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा, बाबा, दीदी, भूली, दाजिયું એ પોતાના ભૂતકાળમાં ખોવાઈ જાય છે અને યાદ આવે છે કે મારું ગામ, ઊંચા ઊંચા પહાડો, નદી, માં, મારા પિતા, મારી મોટી બહેન, નાની બહેન, મોટો ભાઈ। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकल जान पड़ी। ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी भूली नहीं, दाजिયું हाँ दाजिયું। હવે મદન તો રાજી રાજી થઈ ગયો કે હાસ મારા ગામનું નજીકનું તો કોઈ છે અહીં, એટલે કહે છે કે આ જગદીશ બાબુ છે, એના નીચે મને એનો આશીર્વાદ મળશે, એની છાયા મળશે। તો એને થાય શું જગદીશ બાબુમાં હું કયું રૂપ જોઉં, માતાનું તો કે ના ના, પિતાનું તો કે ના, બેનનું તો કે ના, નાની બેનનું તો કે ના, ભાઈનું મોટા ભાઈનું તો કે હા એ મોટા ભાઈનું રૂપ બરાબર કે ભાઈ આજે જગદીશ બાબુ છે એ મારા મોટા भाई समान गणाए। 2-4 दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच अजनबी की पन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता है। 2-4 દિવસની અંદર મદન અને જગદીશ બાબુની વચ્ચે જે અજાણ્યું હતું એ દૂર થઈ ગયું। પછી તો એ બંને મિત્રો બની ગયા। દાજુ જય હિન્દ, પછી એ બોલતો કે મોટા ભાઈ જય હિન્દ। દાજુ આજ તો બહુ ઠંડ है। પછી એ લોકો વાતો કરવા પર લાગ્યા કે મોટા ભાઈ આજે બહુ ઠંડી છે। દાજુ क्या यहाँ भी हयू पड़ेगा, કે છે મોટા ભાઈ અહીં પણ बर्फ पड़શે। दाजू अपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी ओर से बोय की आवाज़ पड़ती है और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुँचने से पहले ही वहाँ पहुँच जाता है। હવે એ કહે છે મોટા ભાઈ કાલે તમે ઓછું જમ્યા હતા। ત્યાં તો કોઈક બાજુથી છોકરો એમ રાડ પાડે છે અને મદન છે એ જ્યાંથી અવાજ આવે એ તરફે પહોંચી જાય છે। ઓર્ડર લેકર ફિર જાતે જગદીશ બાબુ से પૂછતા है दाजी कोई चीज। હવે ઓર્ડર લઈને જતા જતા જગદીશ બાબુને પૂછે છે કે તમને કાંઈ જોઈએ છે, પાણી લાવો, કે શું કહે છે પાણી લઈ આવો। लाया दाजू शब्द को उतनी आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। कैसे लाया मोटा भाई એ કહી અને એ તો એટલો દોડી દોડીને જાય છે કે જાણે કે કેટલાય વર્ષો પછી મા અને પુત્ર ભેગા થયો, મા પોતાના બેટાને ચૂમતી હોય। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। થોડાક દિવસમાં જ जगदीश बाबूનું એકાકીપણું હતું એ દૂર થઈ ગયું। उन्हें अब चौके कैफे ही नहीं सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू। હવે એને શું થાય છે કે એ હવે પોતાના રંગમાં રંગાઈ ગયો, પણ એને વારંવાર મોટા ભાઈ શબ્દ ગમતો ન હતો। એટલે બદન પર શું છે કે બીજી ટેબલ પર કામ કરતો હોય તો પણ મોટા ભાઈ કયા કરતો। મદન ઇધર આવો, વળી પાછા બોલાવે છે જગદીશ બાપુ, મદન અહીં આવો। आया दाजू आवे मोटा भाई। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली दौड़ी अहम की तेज धार के आगे टिक न सकी। કે મોટા ભાઈના શબ્દો એને ગમ્યો નહીં અને એનો જે સંસ્કાર હતો એ જાગી ઉઠ્યો। કહે છે કે મને આ ગમતું નથી। दाजू चाय लाऊं? चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात, किसी की प्रेस्टीज क्या ख्याल भी है नहीं तुम्हें। કે આ શું મોટા ભાઈ તમે આખો દિવસ બોલાવ્યા કરસ કે કોઈની અહીંયા કને પ્રેસ્ટીજ શું છે, ઇમ્પ્રેશન શું છે એની પર તને ખબર નથી। એની પ્રેસ્ટીજ એટલે આબરૂ ઇજ્જત, એની પર તને ખબર નથી। જગદીશ બાબુ
का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया, शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। કહે છે કે જગદીશ બાબુનું ક્રોધને કારણે એ તમતમી ગયા હતા, પણ એ સમજી ગયો કે આ મને શું કહેવા માંગે છે। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर से कोठरी में सिसकिया भर भर कर रोता रहा। गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसी ईर्जा की गोदी से बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चित करता है वह भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होती है। કે જ્યારે જગદીશ બાબુએ કીધું કે તું મને મોટો ભાઈ કહે નહીં, ત્યારે એને શું થઈ ગયું? રડવા માંડી ગયો કે ઓહો કેટલાય સમય પછી મને પોતાનું કોઈ મળ્યું તો જાણે ત્યાં તો એવું લાગે છે કે જાણે મારી માએ એના ખોળામાંથી, મારા પિતાએ મને એના તેડેલો હોય એના હાથમાંથી, મારી બેનના સ્નેહમાંથી જાણે કે ફરજિયાત કોઈ બલપૂર્વક ખેંચીને મને એક બાજુ રાખી દીધો હોય એવું મને લાગે છે। मदन पूर्ववत काम करने लगा। मदन फरीथी पहलानी जेम काम करवा लाग्यो। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। कि बीजा दिवसे अचानक होटल में जता समये एनी भेंट एक नानपणना मित्र साथे થઈ અને હોટલમાં જાય છે અને જગદીશ બાબુ ઈશારો કરીને મદનને બોલાવે છે, પરંતુ એને એવું લાગે છે કે મદન એનાથી दूर दूर જતો રહ્યો હોય। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और नहीं उसने क्या लाऊं दाजू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही करना पड़ा, 2 चाय 2 ऑमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। કે છે એના સહપાઠી મિત્ર સાથે એનો સાથે જે વ્યક્તિ ભણતો હતો એની સાથે એ હોટલમાં જાય છે અને મદનને બોલાવે છે। તો આજે મદન શું કરે છે? એમને એમ આવે છે। બીજી વખત જ્યારે બોલાવે ત્યારે એમ નથી બોલતો, બોલો મોટા ભાઈ તમારા માટે શું લઈ આવું? તો જગદીશ બાબુને પોતાને જ ઓર્ડર આપવો પડે છે કે 2 ચા અને આમલેટ લઈ આવ। તો એમ નથી બોલતો કે હા લાયા દાજુ, હા લાયા મોટા ભાઈ, અને એમ કહે છે કે હા લઈને આવ્યો સાહેબ। जाने એવું લાગે છે બંને अपरिचित હોય। शायद पहाड़ियाँ है। हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा, शायद पहाड़ियाँ का है? कहे कि आ कदाच पहाड़ी प्रदेश नो है। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय बदल लिया। मदन चाय ले आया। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। इन्हें पूछूं? हेमंत के तार नाम शू है? कुछ ही क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू अपने तो कल थोड़ा ही खाया और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। ऐसो कहे थोड़ीक वार तो टेबल पर गंभीरता छवाई गई અને જગદીશ બાબુની જે આંખ હતી, નજર હતી એ પ્યાલી સામે જ રહી। અને મદનને પહેલાંની બધી વાતો યાદ આવે છે કે જગદીશ બાબુએ પણ આવી તેનું નામ પૂછ્યું હતું, પછી એણે પોતાના ગામ પૂછ્યું હતું, પછી એનામાં આત્મીયતા થઈ જાય છે, મોટા ભાઈ સમજે છે, એ બધું યાદ આવે છે। એટલે કહે છે કે ભાઈ ના, હવે તો મારે કોકની ઇજ્જત, કોકની પ્રેસ્ટીજનો ખ્યાલ રાખવો પડે। એટલે કાંઈ બોલતો નથી। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? हेमंते फरीथी आग्रह કરીને પૂછ્યું કે બોલ તો ખરો તાર નામ શું છે? બોય कहते हैं साहब मुझे, કે છોકરો કહે છે સાहब બધા મને। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया। आवेश में એનો ચહેરો લાલ થઈ અને વધારે પડતો એ રૂપાળો લાગવા
માંડ્યો। ધન્યવાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો।